But I think we can start. Okay, ma'am. A very good evening to everyone present here. I, Santripti Verma, welcome you all on behalf of Innovation and Incubation Cell BIT Jhansi. The tricolor is our pride. We will always keep our head high as long as there is life. Azadi Ka Amrit Sarovar is an ongoing celebration to commemorate the 75 glorious years of a progressive independent India. Under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, a campaign called Har Ghar Tiranga initiative has been launched to encourage the citizens to host the national flags of India in their homes. Today, some people dream of success while other people get up every morning and make it happen. Today, we are here for an interesting talk on the topic life story sessions of Indian scientists and innovators. Speaking of successful people, one must have heard of Sir APJ Abdul Kalam and Sir Moksh Gundam Visveswaraya. They both are an inspiring personality who lived their life with principles and dignity, which should be a motivation for all of us. Moving forward, I would like to invite Shashi Pratap Singh and Shubhangi Tiwari to take over and enlighten us with Dr. Kalam's life and his contribution towards science and education. Shubhangi and Shashi, you may continue. I climbed and climbed. Where is the peak, my lord? I plowed and plowed. Where is the knowledge treasure, my lord? I sailed and sailed. Where is the island of peace, my lord? Almighty bless my nation with vision and sweat, resulting into happiness. These are some patriotic lines from the person who enjoyed flying high since childhood and was equally curious to know how the birds fly in the air. He was very intelligent and enjoyed reading, but due to some economical imbalance in his family, he used to support his family by selling newspapers. The person who played major role in building the nuclear capabilities of India, the person who was awarded an honorary doctorate by more than 30 universities across the world, the person who spent his entire life in service and was the inspiration for the nation and youth, the person whose death is a never ending loss to the country. Yes, I'm talking about the missile man of India and the 11th president of India, Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. Greetings, Greetings, everyone. everyone. I'm Shubhangi Tiwari, I am Shashi Pratap Singh. and we are here to present the life journey of the person with wings of fire. भारत के लोगों के लिए डॉक्टर कलाम किसी मिसाल से कम नहीं। लोगों के मन में इनके लिए काफ़ी सम्मान है और लोग इन्हें सर एपीजे अब्दुल कलाम कह के बुलाते हैं। भारत के मिसाइल मैन का जन्म रामेश्वरम के एक गरीब मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। अबुल इनके परदादा, पाकिर दादा, जैनुलाब्दीन पिता और इनका नाम अब्दुल कलाम। घर में 10 भाई बहन होने के कारण पैसे की कमी तो होनी ही थी। इन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। पढ़ाई के लिए ये सुबह जल्दी उठ के अखबार बेचते थे। इससे इन्हें 2 फायदे होते थे। पहला, इन्हें पैसे मिलते थे। दूसरा, ये अखबार पढ़ के देश दुनिया की खबर रखते थे। He was admitted to St. Joseph's College, Trichurapalli, and later he went on to complete a degree in physics in 1954 and then studied at Madras Institute of Technology and graduated in aeronautical engineering in 1955. Since childhood, Dr. APJ Abdul Kalam wanted to become a pilot but couldn't make his dream come true. He learned from his mistakes and accomplished numerous achievements in his life. After completing his degree, Abdul Kalam entered the Defense Department of India, that is,
Defense Research and Development Organization as a scientist after becoming the member of Defense Research and Development Services. अब्दुल कलाम ने अपनी यात्रा का प्रारंभ एक होवरक्राफ्ट को डिजाइन करके किया। इन्होंने विक्रम साराभाई के अंतर्गत भी काम किया। 1963 में ये नासा गए प्रशिक्षण के लिए। वहां पे इनके काम से प्रसन्न होकर नासा ने अमेरिका की नागरिकता के साथ अपने साथ काम करने का इन्हें मौका दिया, पर ये देश प्रेम और राष्ट्र सेवा भाव के कारण वापस आ गए। Kalam played an integral role in convincing the Union cabinet to convey the truth nature of classified newspapers projects. This research and educational leadership brought him great laurels and prestige in 1980s, which an advanced missile program under dictatorship. Kalam played a major role in developing many missiles under the mission, including Agni, an intermediate range ballistic missile, and Prithvi, the tactical surface to surface missile. 1969 में इनका इसरो में ट्रांसफर हुआ था। ये भारत के फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी कक्षा में पहुंचाया। 1965 में कलाम जी ने एक्सपेंडेबल रॉकेट सिस्टम में स्वप्रेरणा से काम शुरू किया और 1969 में कलाम जी के इस काम को सरकार ने स्वीकृति भी दे दी। कलाम जी को राजा रमन्ना ने भारत के प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट को देखने के लिए बुलाया। कलाम ने फिर 1992 से 1999 तक भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार और डीआरडीओ के सचिव के रूप में पद संभाला। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट इसी दौरान हुआ, जिसमें कलाम जी ने राजनैतिक और तकनीकी भागीदारी दी। इस दौरान आर चिदम्बरम के साथ ये इस प्रोजेक्ट के चीफ डायरेक्टर थे। इस दौरान मीडिया ने इन्हें देश का बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी कहा। Later, he won 2002 presidential elections and served as the 11th president of India. The person who aimed to become a pilot got 9th position in Indian Air Force, which was recruiting for 8 positions, was now the head of defense staff. इस दौरान इन्हें प्यार से जनता का राष्ट्रपति बुलाया जाता था। प्रॉफिट बिल पे हस्ताक्षर करना एक बहुत ही कठिन निर्णय था जो इन्होंने लिया। After leaving the office, succeeded by Pratibha Devi Singh Patil, Kalam became a visiting professor at the Indian Institute of Management, Shillong, the Indian Institute of Management, Ahmedabad, and the Indian Institute of Management, Indore. He was also the Chancellor of Indian Institute of Space Science and Technology. He even taught information technology at Indian Institute of Information Technology, Hyderabad, and Technology at Banaras Hindu University and Anna University. 27 जुलाई 2015 को कलाम IIM शिलोंग में लेक्चर देने के लिए गए, जिसका टॉपिक था क्रिएटिंग अ लायबल प्लैनेट अर्थ। 5 मिनट के भाषण देने के बाद ही ये बेहोश हो गए। उसके बाद इन्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां हृदय आघात के कारण इनकी मृत्यु घोषित कर दी गई। The person who was known for his simplicity, knowledge, and the never-ending attitude of being curious is no more, but is still alive in the hearts of young inventors and scientists who feel to do something great for the betterment of our country. भारतीय अस्मिता के प्राण और प्रतीक कुंज, संस्कृति कुंज धर्म को प्रणाम है। ज्ञान विज्ञान के मनोहर समन्वय को, मानवी मंदिर ललाम को प्रणाम है। माता भारती के पुण्य धर्म सभी पुत्रों में सबसे पवित्र उस नाम को प्रणाम है। एक स्वर में मेरे साथ बोले आप सभी, श्रीमान अब्दुल कलाम को प्रणाम है। धन्यवाद। Thank you. Thank you, Shashi and Shubhangi. Great names do not frame on their own, they are made by hard work and determination. Now, further, I would like to invite Ujjawal Sahu and Jaya Gupta to illuminate us with Sir M. Visveswaraya's life and his benefaction in the field of Indian engineering. Ujjwal and Jaya, you may take over.
A very warm good evening to one and all present here, respected faculty members, staff and families, and all my dear friends. On behalf of BIT Jhansi, I extend my warm welcome to all of you present here. My name is Jaya Gupta, branch Electronics and Communication Engineering. And my name is Ujjawal Sahu, branch Electronics and Communication Engineering. We are here to deliver a speech on a very inspiring personality, Sir M. Visveswaraya. लोगों की कोशिशें हैं चमक इसकी, वरना तो महफिल भी वीराना है। आओ सब हाथ बढ़ाओ, इस घर जैसे मुल्क को हमें ही सजाना है। जिस तरह एक सुहानी शाम, ठंडी मध्यम हवा, ढलते लाल सूरज, चिड़ियों की चहचहाट और एक सुकूनियत भरी रात की उम्मीद से बनती है, उसी तरह एक शक्तिशाली राष्ट्र, वहाँ के लोगों की देशभक्ति, देश के विकास में किए गए कार्य, अनेक तरह की नीतियों, शिक्षा के स्तर एवं कम साधनों में भी आगे बढ़ने की चाह से बनता है। Every person has a part in the development of his country. Sometimes this part is a big or small, but it doesn't matter. Either you be scientist, doctor, engineer, economist, teacher, or even a small vendor, your part matters. And we engineers play the vital role in making the exterior structure of our country, which is seen by the whole world. A real engineer is not only the builder of building, machine, bridges, software, but also the builder of his fate. To fighting the hurdles of his life and achieve what he wants, many people follow the path that has been made by others, but only few are there who make their own way, about which the society has fear to do so. जी हाँ, किसी ने कहा है कि आराम की जिंदगी तो सभी बिता लेते हैं, मगर मुश्किलों से लड़कर जो अपने जीवन की मंजिल पाते हैं, वही जीवन संग्राम के सच्चे योद्धा कहलाते हैं। और आजादी की इस 75वीं वर्षगांठ पर हम एक ऐसे ही योद्धा, भारतीय प्रौद्योगिकी के पितामह सर मोक्षधाम अय्यर की जीवन यात्रा पर जा रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस यात्रा पर हमारे सहयात्री बनकर उनके जीवन के हजार पलों को पुनर्जीवित करें। Visveswaraya means the god of world. In reality, Sir Visveswaraya was god of the industrialization and many engineering college. He was eminent engineer, honest statesman, and finest writer. Sir MV was born on 15 September 1880 in Chikkabalapur in Kolar district. He born into a Brahman family. His father's name was Srinivas Sastri and mother's name Venkchama. His father was a prominent Sanskrit scholar of his times. His parents were very simple but principled people. सर एमवी भी अपने माता पिता के जैसे एक सैद्धांतिक और बौद्ध व्यक्ति थे। यद्यपि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी इनके माता पिता ने इनकी बौद्धिकता की कद्र की और इनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। लेकिन 12 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का निधन हो गया, जिसके पश्चात इनका पालन पोषण इनके भाई ने किया। इसे भाग्य का खेल कहें या उसका इम्तिहान, सर एमवी के परिवार को गरीबी जकड़ती रही, जिससे कि उनको ट्यूशन देनी पड़ी, मजदूरी करनी पड़ी, मगर इन सब के बीच उन्होंने हार नहीं मानी और शिक्षा जारी रखी और सन 1881 ईस्वी में बीए की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। If the great artist pour his hands in any field, then the field become a puppet for his hand. This quote was written for Sir MV, an art student, changed its stream and joined engineering from Science College, Pune. And again he secured first rank in BTech level examination in 1883. And in view of this, Maharashtra government appointed assistant engineer in PWD department, Nashik. सन 1896 ईस्वी सिंधु घाटी से कस्बे में पानी की आपूर्ति की जानी थी। सिंधु नदी का पानी हमेशा गंदा और फीका पड़ा रहता था। शहर में वितरण से पहले पानी को फिल्टर तथा शुद्ध कराना था, परंतु सुक्कर की नगर पालिका के पास इतना पर्याप्त धन नहीं था कि वो फिल्टर खरीद सके। सर विश्वेश्वरैया ने अपनी बुद्धिमत्ता का जादू बिखेरते हुए इस समस्या का हल निकाला। उन्होंने नदी से कुछ दूरी पर कुएं खुदवाए और सुरंग के द्वारा उसे नदी से जोड़ दिया और उसमें एक पंपिंग इंजन लगा दिया।
जिससे नदी के नीचे का शुद्ध पानी कुओं में एकत्रित होने लगा और शहर में पानी की आपूर्ति पूर्ण रूप से होने लगी। इस व्यवस्था को आज कलेक्टिंग वेल के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र हमें प्रौद्योगिकी की कई किताबों में मिलता है। Then, in 1899, whenever an irrigation facility opened, the beneficiaries usually used water indiscriminately, leading to irregular, wasteful use of water, resulting in lower crop yields and damage to lands due to waterlogging salinity. Sir MV understand the problem and introduced a block system in which an irrigation worked over a larger number of villages and to concentrate irrigation in each village within blocks of specified units and in selected soils and situations. सर एमवी लगातार पुरानी तकनीकों में अपनी रचनात्मकता से सुधार करके नई जमाने की परेशानियों के लिए तैयार कर रहे थे। सन 1903 ईस्वी तक जलाशयों में स्वचालित दरवाजे नहीं थे, जिससे जलाशयों से पानी निकलने के लिए ऊपरी ढलान का प्रयोग किया जाता था, मगर इसके लिए पानी का स्तर ऊपरी भाग तक होना जरूरी था, जिससे सिर्फ और सिर्फ शीर्ष भाग का ही पानी निकल पाता। सर एमवी ने इस समस्या को समझा और कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के दौरान इसमें 48 दरवाजे लगवाए, जो कि स्वचालित थे। इसमें उन्होंने दरवाजों को चेन पुली और उन्हीं के समान वजन वाले भारों से जोड़ दिया। पानी के शीर्ष स्तर तक पहुंचने पर अपने आप पानी का दरवाजा भार से खुल जाता और सारा पानी मध्यम और नीचे भाग से निकल जाता। For three iconic works by Sir MV, London Institutes of Civil Engineers gave a membership of unbroken 50 years. And again, in 1906, he got the title Kesher-e-Hind in recognition of his services. Many big post engineers knows he caught their position and Britishers didn't want any single crack in his monopoly system. That's why they sent him to Eden. There, he learned drainage system and worked on many projects successfully, and a better becomes more better. After these conspiracies of Britishers, Sir MV feel more comfortable in Eden than in India. He didn't want to come back, but in 1909, in River Musi, which runs through the city of Hyderabad, dividing it into two parts, most destructive cyclonic flood occurred. It washed away 3 bridges, Afzal, Musallam, and Chadarghat. The 50,000 people were killed by this flood. After this destruction, Nizam of Hyderabad had not a wish that this incident happened again. He sent a request to Sir MV for coming back and save city from this type of devastation. MV inspected whole incident with his team of PWD for many days, and he concluded that the maximum population of Hyderabad city from flood must come from the flood catchment areas in the basin above the city. He reconstructed the city and 2 reservoirs which is located at river Musi and EC and 25,000 million cubic feet water, and this water is used for irrigation. ये अंग्रेजी सरकार के अधीन उनका आखिरी काम था। इसके बाद उन्होंने सन 1909 ईस्वी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, परंतु उनकी नायक जैसी छवि हैदराबाद और मैसूर के हर शख्स के हृदय में बस गई। सन 1912 ईस्वी में मैसूर के निजाम ने उनको दीवान पद प्रदान किया और यहाँ से उनके एक राजनीतिज्ञ के तौर पर सफर शुरू हुआ। दीवान के पद को संभालते हुए उन्होंने मैसूर का नक्शा ही बदल दिया। सर्वप्रथम उन्होंने प्रौद्योगिकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कई चीनी की कारखाने, गेहूं के कारखाने, चावल के कारखानों की स्थापना की और निर्यात इसका पूरे देश में करवाया। विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए सन 1919 ईस्वी में भगवती आयरन मिल की स्थापना की। भगवती आयरन मिल देश का पहला कारखाना था जहां जर्मनी और अमेरिका के जैसे कच्चे लोहे को रॉट आयरन में बदला जाता था, क्योंकि उससे पूर्व देश में लोहे का आयात होता था। यद्यपि यहाँ पे लोहे का अयस्क मिलता तो था, परंतु उसकी धातु क्रम के लिए कोई कारखाना नहीं था। भगवती आयरन मिल के आ जाने से अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा देश में ही रहने लगा और कई देशों में लोहे का निर्यात भारत से शुरू हो गया। Like Swami Vivekanand and Srinivas Ramanujan,
a personality that the whole world lying down his knees in front of him. Britishers also stepped back in front of Sir MV and awarded him as a Knight Commander of the Order of the Indian Empire and appointed him as a chief engineer in Mysore. There was a very prestigious thing for any Indian when Britishers were bounded to give him a post for his work. Sir M.V., also a great writer and economist, he wrote many Kannada novels, short stories, and poems. He wrote a book, A Planned Economy of Visveswaraya. In his book, he proposed a 10 years plan with the aim of doubling the income of the country. His main emphasis was on industrialization, so as to reduce the population dependent on agriculture and increase the population employed in industries. What plan was drawn within the framework of a capitalist economy. जिस उम्र में व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है, उस उम्र में भी सर एमवी देश का टाटा स्टील जैसे बड़े प्रौद्योगिकों का भार संभालते रहे। चाहे 1938 ईस्वी में उड़ीसा को बाढ़ से बचाने के लिए हीराकुंड बांध की स्थापना हो या मोकामा पुल जो बिहार में स्थित है वो, सर मोक्षधाम हमेशा मसीहा की तरह उनका बचाव करते रहे। ये सफर चलता रहा और वो अपने साथ साथ लाखों लोगों की कहानियों में नायक की भूमिका अदा करते रहे। सन 1955 ईस्वी में उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि भारत रत्न है। पर हर कहानी कहीं ना कहीं रुकती है, हर काफिला कहीं ना कहीं थम जाता है, हर सुबह की रात होती है। उसी तरह माँ भारती की सेवा करते करते उनका पुत्र सन 1960 ईस्वी में रुक गया और चिरकाल के लिए निद्रा में चला गया। So now we are ending our speech here. Thank you, everyone. Thank you so much, Ujjawal and Jaya, for such a wonderful speech. Now, before concluding today's wonderful session, I would like to request respected Honorable Faculty Member Dr. Shehnaz Ayub Ma'am to inspire us with some precious words. Okay, so before concluding this wonderful session, I would like to invite respected Honorable Faculty Member Dr. Shehnaz Ayub Ma'am to inspire us with some precious words. Ma'am, please. Santripti, did you call me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Is it for winding up? Is it for Yes, winding ma'am. up of Yes, the ma'am. session? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So both the sessions were wonderful, and I really congratulate the team and the speakers, young speakers or students, and keep it up. Keep growing like this, and do your best for the students, for your juniors, for seniors, and always keep in mind that you have to work for institute and for betterment of the society. So with this, again, I congratulate all the team and Santripti and the young speakers. So, yeah, Santripti, so you can wind up. Yeah. Okay. Thanks a lot. Yeah. Thank you. Okay, ma'am. Thanks to you Now, all. Yeah. okay, ma'am. Now let's conclude the session. I would like to thank all the participants who joined us today and made this session a memorable one. Now you may leave the meet.